Jomyir jini, who represents the language of Galo. एक जोरदार तालियां तो एक खूबसूरत कविता के होगी हम। नमस्कार सभी को। Respected Chairperson and distinguished learners, also in the hall. Thank you to Sahitya Academy and to our university for having me as we celebrate the Day for Indigenous People. I bring greetings from the land of the rising sun, Arunachal Pradesh. मेरा नाम डॉक्टर जोमियर jini है। मैं अरुणाचल प्रदेश के गालो समुदाय से हूँ। हमारे वहाँ कई भाषाएं बोली जाती हैं, 100 से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं। उन्हीं में से एक है गालो। आज मैं आपकी समक्ष 2-3 कविताएं लेकर आई हूँ। मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है इगिन और पयो। ये कविता मैंने गालो भाषा के कुछ शब्दों को लेकर हिंदी में लिखा है। तो जैसे मैं कविता पढ़ूं उससे पहले मैं उन भाषाओं का आपको अनुवाद बता देती हूँ। अन्न यानी कि माँ, इगिन यानी कि टोकरी जो हम लेते हैं, अब वो हम पिताजी को कहते हैं। ओयो एक प्रकार का चाकू इन इंग्लिश एंड इट इज टाइटल्ड आई मस्ट गो। It is my response to the cries of Mother Nature. I come from tribal mountains and every day it is a struggle in balancing our roots and culture while going forward in this technologically driven modern world. We need good road and connectivity, but at what expense? At the expense of our beautiful lush green mountains, and so it says. The mountains are calling. The mountains are calling and I must go. The trees are falling and I must go. But they are not diseased. Rather taken with too much ease, unable to serve up for humans' great craft. We need electricity and so we might make dams, but at what expense? At the expense of homes and villages not flooded with water. And so I say, the rivers are drying. The rivers are drying and I must go. The streams are crying and I must go. But they are not sick. It is not for them to pick. Being held up by cements and bricks, oh, poor human tricks. The rivers grieve. The rivers grieve for the villages they have flushed. They couldn't help it when they were being rushed. When you want to establish industries in plains, you say you require a plot of land. But it is not so easy and accessible in our tribal terrains. We have to first cut down mountains to bring architectural structures to life, and many a times these make our magnificent mountains feeble and leads to landslides. And so I say, the mountains are sorry. The mountains are sorry for the homes they have shattered. The mountains are sorry for the homes they have shattered. They tried to stay put as long as they could. The mountains are calling and I must go. The trees are falling and I must go. But they are not diseased, rather taken with too much ease, unable to serve up the human's great cause. The rivers are drying. The rivers are drying and I must go. The streams are crying and I must go. But they are not sick. It is not for them to pick. Being held up by cements and bricks, oh, poor human's tricks. The rivers grieve. The rivers grieve for the villages they have flushed. They couldn't help it when they were being rushed. The mountains are sorry for the homes they have shattered. They tried to stay put as long as they could. Earth is falling apart at humans' hand. It is high time to take your stand. Do you want to be the last generation to have seen nature's narration of majestic stories before us, of magnificent stories beyond us? It is high time to take your stand. Earth is falling apart at humans' hand. तलवार की तरह थोड़ा इतना बड़ा होता है। हमारे समुदाय में एक बात है कि हम सूर्य देवता नहीं कहते। जब हमारे गालो भाषा के संदर्भ में सूरज एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाता है, तो हम सूर्य देवता नहीं कहते, हम सूर्य देवी या सूर्य माँ ऐसा कहते हैं। और आनंदोनी कहते हैं। और जैसे कि ये
पोशाक जो मैंने पहना है इसे हम गाला कहते हैं, ये हमारी वहाँ की महिलाएं पहनते हैं। और हबर हम लंगोट को कहते हैं जो आदमी पहनता है। तो कविता कुछ इस प्रकार है। इगिन और अयोग यानी कि टोकरी और तलवार। अनर के साथ इगिन लिए जंगल जाया करती थी। माँ के साथ टोकरी लिए मैं जंगल जाया करती थी। भर भर टोकरी सब्जी बटोरा करती थी। अबो के साथ अयोग लिए जंगल जाया करती थी। मतलब पिताजी के साथ मैं तलवार लिए जंगल जाया करती थी। घर में घेरा लगाने बांस लाया करती थी। इगिन और अयोग के बीच कभी चुनना नहीं पड़ा था, यानी कि टोकरी और तलवार के बीच कभी चुनना नहीं पड़ा था। बेटी हूँ बेटा नहीं, कभी सुनना नहीं पड़ा था। अनर के साथ इगिन लिए जंगल जाया करती थी। भर भर टोकरी सब्जी बटोरा करती थी। अबो के साथ अयोग लिए जंगल जाया करती थी। घर में घेरा लगाने बांस लाया करती थी। इगिन और अयोग के बीच कभी चुनना नहीं पड़ा था। बेटी हूँ बेटा नहीं, कभी सुनना नहीं पड़ा था। स्कूल की बहुरूप पोशाक प्रतियोगिता में 5 वर्षीय मैं अनदोनी नहीं, यानी कि स्कूल के बहुरूप पोशाक प्रतियोगिता में 5 वर्षीय मैं सूर्य देवी नहीं, बल्कि मैं आबोतानी बनी थी, यानी कि मैं पुरुष देवता बनी थी। गाला नहीं, हावा पहनी थी। मैंने ऐसा महिलाओं की तरह पोशाक नहीं, मैंने लंगोट पहना था, पारंपरिक महिलाओं की तरह नहीं। स्कूल के बहुरूप पोशाक प्रतियोगिता में 5 वर्षीय मैं अनदोनी नहीं, आबोतानी बनी थी। मैं गाला नहीं, हावा पहनी थी। इगिन और अयोग के बीच कभी चुनना नहीं पड़ा था। बेटी हूँ बेटा नहीं, कभी सुनना नहीं पड़ा था। यूं ही बचपन बचपने में बीत गई और आपकी छोटी सी बेटी सयानी हो गई। हुई मेरी रिश्तेदारों में खूब चर्चे, कहा कितना करोगे और उसमें खर्चे। हुई मेरी जवानी की खूब तैयारी, अर्जी जारी की है बहुत भारी। जनसभा ने जताई शंका, दूल्हा ढूंढो कोई ढंग का। वो कहने लगे कि मेरे सपनों में भी होंगी बहन, कि मैं अपनी नहीं हूँ, मैं पराया था, कि मेरी लकीरें यूं ही बनकर आई है, इसमें क्या ही दोष, क्या ही दुहाई है। वो कहने लगे कि मेरा अस्तित्व मुझसे नहीं, पारिवारिक दायित्व से है, कि मैं पाप घर में ही ठीक, चाकू छुरी एकदम सटीक। मैं कहती हूँ आपकी निगाहों से निगाहें बराबर कर चल सकती हूँ, हर रंग रूप में ढल सकती हूँ। सारा का सारा बस एक भ्रम ही तो है, देखिए हमारे एक से कर्म ही तो है। इगिन और अयोग के बीच कभी चुनना ना पड़े। बेटी हूँ बेटा नहीं, कभी सुनना ना पड़े। Is entirely in Galo. I come from a patriarchal society where the son is generally given the burden of carrying forward the legacy of the family. And when I introduce myself as Jomyir, and you are from my community, you will be able to derive my name to my ancestral village, because we take our names from our fathers. The last portion of my father's name is the origin of my name. My grandfather's name is Dakil. From Dakil, my father's name is Jom, and from my father, my name is Jomyir. So if I say my name is Jomyir, you will be able to know from which village I come from. So in this poem, the protagonist is a daughter who is promising her father and grandfather that she will take forward the family name and finish the works that they couldn't do in their lifetime. The title of the poem is Nokka Lakor Korpu Manama, Aapke Kuch Chhute Kadam. Koyum Gayum Kaga Kaji Gajimi Lokka Nenna Omano, Tamuk Kamukta Gadaki Gaki Jom Lokka Nenna Omano, Nokka Lakor Korpu Manama, Ngokor Pekir. Ngodoni Kaso na Malasin, Moyuma Maso na Malasin, Ngok Ijil Kam Gagaiba Ilamayosin, Aj Grisik Nango, Ali Gulgo Gogo Lengaye, Nokka Lakor Korpu Manama, Ngokor Pekir. Ai Bidda Binnam Gaiba, Munga Almanam Bingam Moye, Dita Kola Duba Nam Gaiba, Alna Naruwa Duba Moye, Nokka Lakor Korpu Manama, Ngokor Pekir.
takana manango, mo takana manango, henga manango, menga manango, doigo mo mengaye, nokkala ko kortu manango, mo kortu devi, nokkala ko kortu manango, mo kortu devi. Thank you so much.